Good evening, guys. Warm welcome to all. This is the market outlook session for 5th July 2022. In this video, we will discuss about Nifty Bank and what are the things that we have to keep in mind for tomorrow's trading session. So first of all, I would like to inform you that today American market is closed and maybe we don't have to worry much about the volatility that happens overnight. Let us now discuss about the data. I've just uploaded the data a few minutes back on the free channel. So if you are not a part of the free channel, please follow the free channel at the rate Chiku Charts on Telegram. Now let me read out the data for you. Clients transactions. They have added as long stock futures, index futures, and index calls. But they have added index puts also in good numbers. And if we see in the data, they have added 97,508 contracts of index puts against 29,538 contracts of index calls, which means they are expecting the markets to open lower tomorrow. FIs have sold index futures and stock futures today, which means they are bearish on the markets, but they have bought index calls in good numbers against index puts. This means that they are expecting that the markets can open higher tomorrow. Proprietary desk traders have sold index futures and stock futures. So they are also bearish on the markets, but they have sold index calls and index puts. And the index puts they have sold in higher numbers, which means they are also expecting that the markets can open higher tomorrow. So as per the data, big players are expecting a good opening tomorrow, but eventually the markets can lose gains in the second half or maybe as the market advances. So let me just explain you how we have to trade tomorrow. Okay, and in cash, FIs have sold 2,149 crores of equities. DIs have bought around 1,688 crore worth of equities today in the markets. Let me just explain you the plan as per the data first, and what are the things that we have to keep in mind if the market doesn't open according to the data. So right now, SGX Nifty is trading at around 15,800 and it is indicating a slight gap down. Let us see how market opens. As per the data, big players are expecting a gap of opening and the closing of the markets was very good today. So first thing is market has closed above the key zones on Nifty Bank, and definitely the next resistance that is coming on the chart is at around this level. So if the market opens flat and it moves around this level, then definitely this is a level which we have to watch out for. And if we are taking a resistance here, then definitely markets can again come to retest the supply zones once. So if you are directly opening near this zone, यहाँ पे directly open कर जाते हैं इस resistance के पास, तो then we have to book profits. अगर आपने कोई overnight positions बनाई आज as long, then definitely अगर market gap up खुल रहा है तो इस जोन के आसपास you need to book your profits once. अगर इसके ऊपर जाता है and you are having more than one lots, maybe आपने calls लिए और आपके पास एक से ज्यादा lots हैं, then try to book partially around this level. और अगर market sustain कर जाता है इस level के ऊपर, then you can try to trail the trade around 34,400 levels. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डेटा में बताया, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है या ऊपर खुल के थोड़ा सा बढ़ जाता है, then definitely there is a chance कि हायर लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है. तो try to book profits at key resistance levels tomorrow. अगर आपने कोई लॉन्ग्स किए आज लेके गए हो तो then try to book profits at good resistance levels. That will be the first plan. Talking about Nifty, एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है निफ्टी पे. Let me just show you on the charts. तो since the last week, जब से मार्केट गैप अप हुआ था, you have seen कि मार्केट ने कभी भी पीडीएच का ब्रेकआउट, मतलब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं दी. बट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द लास्ट वीक अपन ने आज प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग. ऑल्सो वी आर क्लोज नियर द 20 EMA मार्क, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, अब एकदम उसके पास क्लोज हुआ है मार्केट. तो व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, मे बी 50,920 भी ब्रेक हो जाता है कल एंड मार्केट ट्राइज टू मूव टुवर्ड 16,000, देन डेफिनेटली जब भी मार्केट में सेलिंग आएगी लेटर ऑन, यू विल सी अ रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल.
20 EM, ठीक है। मे भी हो सकता है अपन गैप फिल करने से पहले एक बार नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। तो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि कल का जो डेटा आया है अपने पास वो बहुत बुलिश नहीं है, एंड एट हायर लेवल्स डेफिनेटली यू विल सी सेलिंग इन द मार्केट। तो अगर मार्केट अच्छी ओपनिंग दे देता है, फ्लैट खुल जाता है या फिर गैप अप हो जाता है और शुरू के फर्स्ट आवर में इट परफॉर्म्स गुड, देन डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अपने प्रॉफिट सही लेवल पे बुक कर लेने हैं, बिकॉज मार्केट्स कैन सी सेलिंग लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे, ठीक है। दिस इज द प्लान। अगर मार्केट अगेंस्ट बिग प्लेयर्स पोजीशन खुल जाता है, बिकॉज बिग प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो और आपको थोड़ा सा गैप डाउन दिख जाता है, तो देन आपको शुरू के 15 से 20 मिनट तक ट्रैक करना है हाउ मार्केट मूव्स। मे बी चांसेस है कि वो पहले गैप फिल करेगा, ऊपर जाएगा एंड देन इट गेट सोल्ड इनटू एट हायर लेवल्स। तो आप दो तरह का प्लान बना सकते हो कल। अगर आपने लॉन्ग्स कैरी किए तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स एट डिसेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, और उसके बाद अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसमें ट्रेड करना। अगर आपने कुछ भी कैरी नहीं किया मार्केट में एंड यू आर गोइंग टू प्ले द इंट्राडे ट्रेड्स, तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि मार्केट को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस पे, जहां से भी आपको लगता है कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा रहा है कल इंट्राडे, वहां से आपको सेल करना। अगर गैप अप हो जाता है तो मे बी यू गेट अ गैप फिलिंग। These are some of the scenarios that can come into play tomorrow, and accordingly you have to decide your starts, ठीक है। I've already mentioned कि you have to book profits at the right levels, and अगर आप नहीं हो किसी लॉन्ग में, then you have to look for selling opportunity at higher levels. This should be your plan for tomorrow. I hope guys that you have learned a lot from this video, and this video will guide you in tomorrow's market. All the best guys. Thank you. Let us meet tomorrow in another market outlook session.